हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? Am I audible to you? हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? करते हैं ना? My name is Aditya Kashyap and I came up live again with part 10 of CPC MCQ series, the question and answer format. In this session, we will deal with the previous year question asked in different judiciary, APO's exam, LLM exam, and other law entrance exam. So, this session is going to help you in every aspect of legal law exam, especially for APO and judiciary, and LLM, okay, also. So, let's start the session of MCQ series, part 10 of CPC, right? So before starting the session, we will see some fact related to CPC, which we have to keep in our mind for sure. So the first fact is CPC 1908 came into force from 1st of January 1909. It consists of 158 section and 51 order, and its applicability, it's applied to whole of India except state of Nagaland and tribal area, right? And it is a procedural law. It applies on civil cases. And what is civil cases, which is not criminal, is civil cases. So these are the facts related to CPC which we must have to keep in our mind. Okay. So now let's move on to the MCQ session of CPC. चलिए शुरू करते हैं. Part 10. We have already discussed 9 part of this session. So today's chapter is reference, which is defined under section 113, right? So let's start with the question number 1. Reference under the CPC may be made to, so reference made to High Court. Okay, so the correct answer is High Court. Reference which is given under section 113 of CPC may be made to the High Court, right? Question number 2. Under section 113 of CPC, any court may state a case and refer the same for the opinion of the, so the opinion of the High Court, right? Under 113 which talk about reference to the High Court. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. So question number 3 क्या कहता है? Who may apply for reference under section 113 of CPC 1908? So court can make reference under section 113 of CPC. Okay, 1908. So reference will always made by the court to the High Court under 113. Okay. आगे बढ़ते हैं. If court is satisfied that a case pending before it involves a question to the validity of any act, the court should refer the matter to the High Court under section 113, right? So this is question number 4. Now let's move on to question number 5. So this is related to the question. This segment is related to review, which is defined under section 114, and order relevant is 47 review. Okay. So we have seen question on reference. Now it's review time. So the question number 1 from review is, which of the following section of CPC 1908 deals with the provision relating to review? So the provision related to review is discussed under section 114 of CPC and order 47. Okay. This is now question number 2. Under section 114 of CPC 1908, any person considering himself aggrieved by a decree or order may apply for. So they may apply for
review. Okay, so review is defined under section 114 and order 47. So under 114 CPC 1908, any person considering himself aggrieved by the decree or order may apply for review under 114. आगे बढ़ते हैं question number 3, right? So question number 3 states section 114 of CPC should be read with. So it should be read with order 47 rule 1. So हम लोग जब भी बात करेंगे रिव्यू की तो सेक्शन 114 के साथ हमेशा हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 47 एंड रूल 1, राइट? आगे बढ़ते हैं. An application can be filed for review of a judgment. An application can be filed for review of a judgment if there is error apparent on the face of record. Okay. So an application can be filed for review of a judgment if there is an error apparent on the face of the record. So this is question number 4, right? चलिए, so आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? An application for review of an order or a decree. An application for review of an order or a decree can be made. So it can be made to the court that made the order or passed the decree. Okay. So an application for review, because review is always done in the same court which passed the decree. So the correct option is option number D, which state that review of an order or a decree can be made to the court that made the order or passed the decree, right? आगे बढ़ते हैं. Question number 6. A petition for review of judgment would lie only when. So a petition for review of judgment would lie only when an appeal is allowed by CPC, but no appeal has been preferred. Okay. So a petition for review of judgment would lie only when an appeal is allowed by CPC, but no appeal has been preferred. आगे बढ़ते हैं. Question number 7 की ओर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है aggrieved person may not apply for a review of an order or judgment of a civil court on one of the following grounds. So aggrieved person may not apply for review of an order or judgment of civil court on the ground that a decree or order is passed in the absence of aggrieved person. When it will not apply, in that case, a decree or order is passed in the absence of aggrieved person. Okay. In that case, uh, uh, aggrieved person may not apply for review of an order or judgment, right? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस review of judgment may not lie. So, under which of the following circumstances review of judgment may not lie? So, when appeal is dismissed, review may not lie. Okay. So, when appeal may dismissed, review may not lie. आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ जजमेंट कैन बी रिव्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ. सो एक जजमेंट को कब रिव्यू किया जा सकता है? तो a judgment can be reviewed when the discovery of new and important evidence not within the knowledge of the party concerned. ये बात है, सही है. दूसरा क्या कहता है? मिस्टेक और एरर ऑन द फैक्ट और लॉ ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. ये दोनों कंडीशन जब मैच करेगा, मीट करेगा, then in that case a judgment can be reviewed. Okay. So when a judgment can be reviewed, when there is a discovery of new and important evidence which is not within the knowledge of the party concerned, and the second one, when the mistake or error of the fact or law on the face of the record, then only a judgment can be reviewed. Okay. So अब आगे बढ़ते हैं रिवीजन. सो हम लोगों ने क्या रेफरेंस कर लिया, रिव्यू कर लिया और रिवीजन. सो रेफरेंस इज
113, review is 114, and now revision 115, right? So, revision. Under section 115 of CPC, the High Court has the power of, High Court के पास क्या power है under section 115? So, under section 115, High Court has a power of revision. So, this the correct answer is 115 में क्या mention है? It is mentioned, revision is mentioned under 115. आगे बढ़ते हैं. Which of the following provision of the CPC 1908 deals with revision? So we have already seen that section 115 talks about revision. So एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं. Reference, review, revision. Reference is defined under section 113. Review is defined under section 114, and revision is defined under section 115 of CPC 1908. आगे बढ़ते हैं. This is question number 2 of the format of revision. Okay. आगे बढ़ते हैं हम लोग. होप यू आर क्लियर टिल नाउ. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? Which of the following code has the power of revision with regard to civil matter? So with regard to civil matter, which code had power to revision? So only the High Court has the power to revision with regard to civil matter. Okay, so High Court has the power of revision, and it is defined under section 115. Okay. The next question is, which section of CPC 1908 is clearly in its nature of power to issue a writ of certiorari? So, power of writ of certiorari is mentioned under section 115, under which the High Court would do what? It do revision. Okay, so it is mentioned, the writ of certiorari is mentioned under section 115 CPC. So 115 CPC रिवीजन की बात करता है, और इसमें रेट ऑफ सर्जरी की भी बात होती है ना. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC, what is the correct among them? So non exercise of jurisdiction vested in court. ठीक है. Irregular exercise of jurisdiction vested in court. Exercise of jurisdiction not vested in a court. नहीं, ऐसा थोड़ी होता है. वो तो vested in court, ये भी not vested in a court. Exercise of okay, हाँ, exercise of jurisdiction not vested in a court. So all of the above is correct answer. So 115, non-exercise of jurisdiction vested in court, irregular exercise of jurisdiction vested in court, and exercise of jurisdiction not vested in a court. So the correct answer under section 115 of which talks about revision, right? आगे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है रिवीजन अंडर सीपीसी is that so it shall not operate as a stay of the suit or proceeding except where such suit or proceeding is stayed by the High Court. So it shall not operate as a stay of suit. So revision will not stay as a operate as a stay of suit or proceeding except where such suit or proceeding is stayed by High Court. So in case of revision, only in that case it will be considered as a stay of suit when it is stayed by High Court. Otherwise, it will not operate as a stay of suit or proceeding. ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? The High Court shall not exercise revision jurisdiction under section 115 CPC 1908. The High Court shall not exercise revision jurisdiction under section 115 of CPC 1908. कब नहीं करेगा अप्लाई? तो जब if the order made by the High Court in the favor of the party applying for revision does not finally dispose of the suit or other proceeding, in that case the High Court shall not exercise revision jurisdiction under section 115. Okay. If the order made by the High Court in favor of the party applying for revision does not finally dispose of the suit or other, जब रिवीजन का हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, उस केस में जब तक रिवीजन का फाइनली डिस्पोज नहीं किया जाएगा सूट और अदर प्रोसीडिंग, तब तक हाई कोर्ट shall not exercise revision power
under section 115. ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ पार्ट 2, ये बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस। सो एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस सेक्शन 132 to 135A। ओके, सो सेक्शन 132 to 135A एग्जेम्पशन की फ्रॉम अपीयरेंस की बात करता है। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, so which one of the following section of CPC provides exemption of certain women from personal appearance in court? तो ये अंडर 132 में मेंशन है। सेक्शन 132 बात करता है इन सम केसेस वेयर exemption for appearance to women is provided. Okay, generally the पर्दा नशी women are the examples. तो इसमें 132 में ये मेंशन है which one of the following section of CPC provide exemption of certain women from personal appearance in the code. hmm. आगे है क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following is not entitled? Who among the following is not entitled to exemption from personal appearance in the code? So इनमें से कौन नहीं exempted है? So कलेक्टर जो है ऑप्शन डी में वो exempted नहीं है। अदरवाइज former Indian ruler, chairman of the state legislative council. Can you guys tell me who is the chairman of a state legislative council in the comment section? And the Minister of State. So these three are exempted from personal appearance in the court, but collector is not exempted. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 कहता है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें से चूज करना है ना सीपीसी। तो ये क्या बात करता है? पहला कहता है एग्जेम्प्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, ये तो सही है ना? तो यही आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं। डज नॉट एग्जेम्प्ट एनी पर्सन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एग्जेम्प्ट एडवोकेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, नहीं, ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या एडवोकेट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है पर्सनल अपीयरेंस? फिर तो कोर्ट केस चलेगा कैसे? एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल कमिश्नर्स फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट, नहीं, इनको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता। केवल दो ऑप्शन नंबर 1 जो है, इट एग्जेम्प्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, और इट आल्सो एग्जेम्प्ट फॉर्मर इंडियन रूलर and the chairman of state legislative council. I have a question for you guys which I have already asked you, so you guys can answer the question in the comment section. Chairman of a state legislative council कौन होते हैं? Who is the chairman of a state legislative council? Okay, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है exemption from personal appearance in the code is provided under, so exemption from personal appearance in the code is provided under section 132, 133, 13 sorry 133, राइट? सो पर्सनल एग्जाम्पशन जो दिया गया है सेक्शन 133 में दिया गया है, ठीक है ना, ऑफ सीपीसी एग्जाम्पशन। आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट? सो मिनिस्टर ऑफ यूनियन बिल्कुल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिल्कुल, जज ऑफ द हाई कोर्ट बिल्कुल। सो ऑल ऑफ द एबव दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द कोर्ट, है ना, सिविल कोड। सो अंडर सीपीसी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 133 जो कि एग्जेम्प्ट करता है कुछ लोगों को पर्सनल एग्जेम्पशन से इन द कोड। ओके, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पीक अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस इन द कोड। इनमें वही सेम क्वेश्चन है। तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यस दे आर एग्जेम्प्टेड। ओके, judges of the Supreme Court are exempted from personal appearance. A Speaker of the House of the People, ये exempted है। President of India, तो guys you guys can tell me in the comment section the relevant section regarding the President of India, uh, ठीक है, appointment of President of, there shall be a President of India, which it is mentioned in which section? You can tell me in the comment section. Another question is a Speaker of the House of People, who is the Speaker of the House of the People? You can comment in the comment section. Okay, the two answer.
And you can also comment the relevant section regarding the supreme, there shall be a supreme court of India, है ना? ये भी आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 133 में जो है exempted all है, so option is option D। आगे बढ़, क्या कह रहा है? ये कह रहा है which of the following are not entitled to exemption from personal appearance under CPC। So exemption is given under section 133 of CPC। So इसमें पूछ रहा है who is not exempted। So president of India, yeah, clearly he is exempted। Public officer is not exempt because the collector is not exempted, municipal commissioner is not exempted, so he is not exempted। Women who, according to the custom and the manner of the country, ought not to be compelled to appear in public। मैंने पहले ही बताया था पर्दा नसीब वुमेन का एग्जांपल, तो ये exempted होते हैं। एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर्दा नसीब वुमेन, president of India, ministers, they are exempted under section 133 of CPC। Okay, but the public officer, the collector, they are not exempted, municipal commissioner, they are not exempted, so their personal appearance is required। क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़ते हैं, है ना? विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी ग्रांट exemption to the member of legislature from arrest and detention under civil process। So member of the legislature, so legislature, member of legislature कौन होते हैं? MP, MLA, ठीक, MLCs, so they are exempted from arrest and detention under civil process। Under which section it is provided? So it is provided under section 135A। 135A के अंदर ये जो होता है सिविल प्रोसीजर कोड जो है ग्रांट करता है एग्जेम्पशन टू द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस, नॉट इन क्रिमिनल, सिविल प्रोसेस में, है ना? तो ये मेंशन किसके है सीपीसी रेलेवेंट सेक्शन में? 135A ऑफ सीपीसी, जो कि एग्जेम्प्ट करता है, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन जो कि सिविल प्रोसेस में, है ना? 135A, okay, under section 135 of CPC, who among the following is exempted from arrest under civil process? So ये सिविल जज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 35, 135 में सिविल जज इज एग्जेम्प्टेड, ओके, फ्रॉम अरेस्ट इन अंडर सिविल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो वो सब इसमें एग्जेम्प्टेड है, मेंबर लेजिस्लेट, क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दे आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 135A, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग person can be arrested, which of the following person can be arrested or detained under civil process? So who may be detained and arrested under a civil process? So a woman who according to the custom mm, and manner of the country ought not to be compelled to appear in the public, okay। So a magistrate while going to the presiding in his court, नहीं, ठीक है ना? So the correct answer is option number D, right? A member of either house, ये arrest can be arrested, नहीं। A member of the legislative council of a state, नहीं। A woman who according to the custom and manner of the country ought not to be compelled to appear in the public, they can be arrested, हाँ, they can be exempted from personal appearance but they can be arrested, okay। अब हम लोग रेफरेंस रिव्यू रिवीजन खत्म हो गया, पर्सनल अपीयरेंस वाला भी खत्म कर लिए, अब हम लोग आ गया रेस्टिट्यूशन। सो रेस्टिट्यूशन की बात किस सेक्शन में की गई है सीपीसी में? सो रेस्टिट्यूशन की बात की गई है 144 में, ठीक है, 144 में रेस्टिट्यूशन की बात की गई है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड। we have already covered reference, review and revision। Now it's time for restitution and we have already covered the personal appearance, ठीक है ना? अब restitution की बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 1, does the civil court, that is trial court, है ना, have the power of restitution on variation of decree or order in appeal? तो ट्रायल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस that had
passed the decree has the power of restitution. Okay, so the correct answer is trial court has the have the power of restitution in case of variation of degree or order in appeal. Okay, so आगे बढ़ते हैं 144 की ये फर्स्ट क्वेश्चन था. अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे. थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, ठीक है. On the reversal of decree, which section impose an obligation on the party to the suit who received an unjust benefit of the erroneous decree to make restitution to the other party for what he has lost? So it is clearly mentioned under section 144. We have already talked about it, है ना. So जहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द रिवर्सल ऑफ डिग्री, है ना, विच सेक्शन इम्पोज एन ऑब्लिगेशन. जहां पर डिग्री का रिवर्सल हो गया है, तो कौन सेक्शन है जो कि ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है रेस्टिट्यूशन का ऑन अदर पार्टी जिसके पेपर पहले डिग्री आया था. तो इसकी रेस्टिट्यूशन की बात करता है सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी, राइट. अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. Which one of the following section of CPC embarrass the principle of restitution? So 144. So principle of restitution is mentioned under section 144. So principle of restitution is mentioned under section 144. Very important question. ठीक है ना. What is the meaning of restitution, है ना. तो restitution मतलब क्या होता है, restoring to a party on the modification, variation और reversal of decree. तो बेसिकली इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आपको. रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि पहले किसी के फेवर में कुछ डिग्री आ गया, बट बाद में पता चला कि वो रिवर्स डिग्री का वो रिवर्सल हो गया. तो अब जो पहले जो बेनिफिट मिल गया था उस पार्टी को, उसको वापस से इसमें स्टोर करना, मतलब दूसरे पार्टी में स्टोर करना, यही होता है restoring to the party on the modification, variation or reversal of the decree. Okay, so this is restitution under section 144 of CPC. Question number so ये क्या कहता है, disposed in a suit for possession filed by B. In appeal, the degree of possession is set aside. ठीक है. The defendant may claim, क्या करेगा आप ही लोग बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोगों ने देखा. So the defendant may claim क्या, what the defendant may claim when the in an appeal the degree of possession is set aside. सेट असाइड का जो पोजीशन का डिग्री है वो सेट असाइड कर दिया जाएगा, तो डिपेंडेंट क्या क्लेम करेगा, ऑब्वियसली डिपेंडेंट रेस्टिट्यूशन क्लेम करेगा अंडर सेक्शन 144. तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, the defendant will claim restitution of possession by moving an application before the court which passed the decree in first instance. Okay, तो क्लियर है क्या करेगा डिफेंडेंट. डिफेंडेंट विल file a restitution of possession by moving an application before the court which passed the decree in first instance. Okay, this is restitution, right. And restitution section 114 144 144. एक सेकंड guys, you can share your experience also while watching the session. Okay, and you can also take part in the session too. चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन सीपीसी, तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है क्वेश्चन पे, है ना. और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 144. आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन अ सूट द ट्रायल कोर्ट पास्ड अ डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, ट्रायल कोर्ट क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन का रिकवरी का डिग्री पास कर दिया. ठीक है, द डिफेंडेंट फाइल्ड एन अपील. No stay of execution of decree was granted by the appellate court. ठीक है, pending the appeal, the possession of the suit property was delivered to the plaintiff in execution of the decree. ठीक है, ultimately the appellate court
allowed the appeal and dismissed the suit. ठीक है? The appellate decree has become final. What is the remedy available to the defendant? So appellate court ने क्या किया? Ultimately the appellate court allowed the appeal and dismissed the suit. ठीक है ना? द अपीलेट डिग्री हैज बिकम फाइनल। ठीक है, तो अपीलेट डिग्री फाइनल हो गया, तो अब इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में एक एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट जो पहले डिग्री पास किया गया था, किस सेक्शन में किया जाएगा? 144 ऑफ सीपीसी में किया जाएगा। और किस चीज के लिए किया जाएगा? रेस्टिट्यूशन के लिए किया गया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जिसके फेवर में दिया था जज डिग्री, उसको वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री भी हो गया। तो अब जब डिग्री बदल दिया गया है अपीलेट कोर्ट में, तो अब जो अप्लीकेंट जो कि डिफेंडेंट था, उसके फेवर में डिग्री आ गया, तो वो अब क्या करेगा? वो सेक्शन 144 के अंदर एक एप्लीकेशन बिफोर द सेम ट्रायल कोर्ट अंडर विच सेक्शन 144, और क्या मांगेगा? रेस्टिट्यूशन मांगेगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होप यू गाइज आर क्लियर अबाउट इट by the way of question. So this is my thought कि question is a very good medium to understand the concept. Okay, so it make the concept very easy for us to understand. Right, let's move on to the question number 7. आगे, oh, okay. So now we are on caveat. Okay, caveat is defined under section 148A. So in which section caveat is defined? So caveat is defined under section 148A. Right. अब आगे बढ़ते हैं। caveat क्या? क्वेश्चन नंबर 1 caveat से related. So guys, if you like the session, if you liking the live session, please do like, share and subscribe and be the part of this beautiful family. Your